Good morning, students. Today, once again, we are going to start the same chapter, Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Yesterday, we discussed up to the page 28, and today we are going to start page number 29. Yesterday, what did we see? हमने क्या देखा था? Evans made a request to his friend Yuri or to find out a doctor who could help him or who could give him certificate because he was not interested in coming to school. He wanted to get rid of school. वो स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था. Now 29 पेज नंबर. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Well. इवांस ने डॉक्टर वेल से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको कैसे बताऊं. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. And doctor said कि Yuri has already told me about your case. Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to the school. Yuri told everything to doctor. That there is my friend, his name is Albert Einstein, and he is not interested in coming to school. It means Yuri exposed all the secrets. Oh dear, Albert's face fell. Albert felt disappointed. He became sad. He shouldn't have told you that. And Albert is saying that Yuri shouldn't have told all the things to you. Why not? Isn't it true then? Yes, that is the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. And Albert डॉक्टर से कह रहे हैं कि अब मुझे देखकर आप क्या कहोगे कि you are very okay, you are very fine and you can go to school. Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure, I am completely convinced that you are in a nervous state about the school. State means condition. डॉक्टर ने क्या कहा? I know that with school, your condition is critical. You don't want to go to school, and whenever comes the name of the school, you have always a nervous breakdown. But I haven't told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? Because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हारी कंडीशन सही होती तो तुम मुझसे मिलने नहीं आते. That is why I know, said the doctor briskly. Briskly means you can read briskly, quickly, Q-U-I-C-K-L-Y. If I certify means if I give you certificate that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do now? डॉक्टर कह रहे अगर मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूं तो what will you do now? I will go to Italy, said Albert, to Milan where my parents are. And what will you do there? Doctor is asking, what will you do there? I will try to get into an Italian college or institute. How can you without a diploma? And doctor said, how can you without a diploma? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work and perhaps there will be enough. That will be enough. I have learned all the maths they teach at school. And Albert is saying that I know what I have been told by maths teacher, I know everything. And a bit more, he added when Dr. Well looked doubtful. Well, it is up to you, he said. I doubt if it will come off. Come off means to be successful. Come off is a phrasal verb, to be successful. डॉक्टर कह रहे मुझे नहीं पता ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? वुड 6 months be all right? डॉक्टर इज सेइंग टू Albert Einstein, how many months do you want or how much time do you want to get away or to keep far from the school? 6 months will be all right? This is very kind of you. And Albert says, yeah, you are very kind if you can do so. It is nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Well handed him the certificate. Dr. Well gave him a certificate and the best of luck. How much? और वो कह रहे पैसा कितना दूँ आपको? Nothing. If you have nothing to spare, आपके पास पैसा नहीं बचा कोई बात नहीं. Yuri, invite Yuri to meal. डॉक्टर कह रहे हैं यूरी जो है ना उसको खाना खिला देना, मील करो, एक भोजन करवा देना. नथिंग, आई डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स. ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. डॉक्टर ने कहा यूरी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड योर्स टू आई थिंक. अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर. अल्बर्ट डिड नॉट हैव एनी स्पेयर मीन्स लाइक टू सेव और टू एक्स्ट्रा मनी. बट ही प्रिटेंडेड, बट ही मेड एक्सक्यूज. उसने बहाने बनाया. ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सफर. व्हाट इज सफर? द लास्ट मील ऑफ द डे इज नोन एज सफर.
Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it is fine. Yuri agreed. 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on and continue on for your diploma. Yuri is saying it is very good to you that you have been given 6 months time. If school में कुछ बुरा भी होता है ना, तो within 6 months you will come back ना. I will never go back to that place. Albert assured. Assured means to made him sure. उसे आश्वासन दिलाया क्या कहा, मैं उस जगह कभी नहीं जाऊंगा. I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow, and that will be the end of it. Don't forget to give a reference in writing from your mathematics teacher first. यूरी ने क्या याद दिलाया, आपके जो मैथमेटिक्स टीचर है उनसे रेफरेंस लेना थोड़ा सा. मिस्टर कोच वॉज मैथमेटिक्स टीचर. willingly उन्होंने voluntarily gave Albert the reference which he wanted. If I say I cannot teach you anymore and probably perhaps you will soon be able to teach me, will that be all right? मैथमेटिक्स टीचर ने क्या कहा कि सोचिए अल्बर्ट, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता और जल्दी ही आप मुझे पढ़ाने लायक हो जाएंगे, तो ये बात सही होगी क्या, तुम मुझे पढ़ा पाओगे? That is saying too much sir. और अल्बर्ट ने क्या कहा कि सर आप कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं. हाउ कैन आई टीच यू? It is the only truth, but all right, I will put it more seriously. It was still a glowing reference. Glowing means shining. Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately, it means very soon, to enter a college or institute. और Mr. Koch ने क्या कहा, मैथमेटिक्स टीचर ने, कि now you are ready to enter into a college or institute for the study of higher mathematics. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class. Mathematics teacher had great confidence इन अल्बर्ट आइंस्टीन. उन्होंने क्या कहा, मुझे बहुत दुख है कि आप स्कूल छोड़ के जा रहे हो, बट इन स्कूल यू आर इन मैथमेटिक्स क्लास यू आर वेस्टिंग योर टाइम. इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. अल्बर्ट सेड सर ओनली इन योर क्लास आई नेवर फील दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? अल्बर्ट ने पूछा आपको कैसे पता कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, वरना तुम रेफरेंस के बारे में मुझसे पूछते नहीं ना. I thought you would wonder. There is nothing to wonder about, Einstein. I know you are going to leave before you know yourself. Albert was puzzled. Puzzled means confused. Albert was confused. What did the teacher mean? He soon found out. Next. अच्छा, टीचर ने एक लाइन कही थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ. I knew you were going to leave before you knew yourself. टीचर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे इससे पहले कि तुम्हें पता लगे. उसका रीजन क्या है? You will be told after some time. He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. इवांस का एक इंटरव्यू था हेड टीचर के साथ. He was summoned means called, CALLED. He was called to the head's room, where it saves me trouble of having to wait an hour or two outside. इवांस को लगा बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल हैव टू वेट. मुझे उनका इंतजार करना पड़ता, 1 या 2 आवर्स का इंतजार करना पड़ता. अच्छी किस्मत है कि उन्होंने मुझे बुला लिया, हेड टीचर ने. He hardly bothered means worried, WORRED or anxious, to wonder, to think why he had been sent for. इवांस ने इस बात के बारे में सोचा ही नहीं कि उसको क्यों बुलाया गया, बिकॉज स्कूल अथॉरिटी हैड डिसाइडेड टू टर्मिनेट इवांस. स्कूल वालों ने पहले ही टर्मिनेट करने का सोच लिया है. किसे? इवांस का. एंड इवांस डिड नॉट नो अबाउट दैट. और उनके जो मिस्टर कोच मैथ्स टीचर हैं वो यही बताना चाहते थे कि इससे पहले कि तुम्हें पता लगे, हमें पता है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो. But vaguely, it means not clearly, as supposed he was to punish again for bad work and laziness. इवांस को लगा उसकी laziness के लिए, bad work के लिए he will be punished once again. Well, he had finished with punishments. I am going to punish you, head teacher said to Albert's surprise. Your work is terrible. Head teacher ने कहा I am going to punish you because your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer and I cannot allow you to stay in the class any longer. I wanted to leave the school now. मैं चाहता हूँ तुम स्कूल छोड़ के चले जाओ. Leave the school now? Albert says dazed. Dazed means stunned. S-T-U. Dazed means stunned. S-T-U-N-N-E-D. Surprise होकर क्या कहा? स्कूल छोड़ के चले जाओ. That is what I said. Yeah, I said the same thing. You mean I am to be expelled? Expelled means terminated. आप मुझे निकाल रहे हैं. You can take it that way if you wish. टीचर ने कहा, हेड टीचर ने, तुम चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो. The head teacher was not mincing words. Not mincing words means the head teacher was not speaking clearly. Head teacher was speaking clearly. Sorry. Not mincing means वो mingle up नहीं कर रहे थे.
ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड और ही वॉज टॉकिंग क्लियरली। ईवान से बिल्कुल क्लियरली ओपनली बात कर रहे थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ऑन अकॉर्ड। ऑन अकॉर्ड मीन्स विलिंगली। सबसे अच्छा होगा कि तुम खुद चले जाओ, अल्बर्ट को कह रहे हैं टीचर, अपनी इच्छा से चले जाओ। एंड देन द क्वेश्चंस वोंट राइज, फिर लोग इस बात के क्वेश्चन कहीं पूछेंगे ही नहीं। अगर हम तुम्हें निकाल देंगे तो लोग पूछेंगे क्यों निकाला। बट अल्बर्ट सेड व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड। अल्बर्ट ने, मैंने क्या क्राइम कर दिया बताओ ना। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। पीपल्स मीन्स डिसाइपल्स, शिष्य। कि when you sit in the class it is impossible for the teacher to teach the students, and the students, the pupils who are sitting in the class, they are also unable to get anything. उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता तुम जो क्लास में बैठते हो। You are such a headache for the class. You refuse to learn. You are in constant, it means continuous rebellion. What is rebellion? Revolt. Revolt, REVOLT. हेड टीचर कह रहे हैं तुम बार बार विद्रोह करते रहते हो, मतलब सामने टीचर का जवाब देते हो। And not serious work can be done while you are here, and while you are in the class nothing serious can be done. Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Beta, burning a hole in his pocket, it is an expression. It means money that somebody wants to spend, money that somebody wants to spend as soon as possible. Here money means certificate he wants to show to the head teacher. इस लाइन का मतलब समझना। इवांस जो है ना, उसको लगा कि जो उसकी पॉकेट में जो सर्टिफिकेट है, बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, इट मीन्स द रियल मीनिंग इसका ये है कि जिस पैसे को हम एज सुन एज पॉसिबल है वो खत्म करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो खत्म करना चाहते हैं, मनी जिससे हम जल्दी जल्दी स्पेंड करना चाहते हैं। पर यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग है कि अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज इन अ हरी, वो इतनी जल्दीबाजी में था, ही वॉज विलिंग टू शो हिज सर्टिफिकेट टू हिज हेड टीचर एज सुन एज पॉसिबल। अपने सर्टिफिकेट को वो दिखाना चाहते थे कि सर मेरा सर्टिफिकेट देख लो एक बार। क्यों? क्योंकि अब वो जाना नहीं चाहता है, मेरी बात समझना। नाउ ही इज फीलिंग बैड, अब उसे बुरा लग रहा है क्योंकि ही इज बीइंग टर्मिनेटेड, उसे निकाला जा रहा है। तो सर्टिफिकेट शो करके वो कह सकता है कि सर माई मेंटल कंडीशन इज नॉट गुड। देन आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे। इवांस, उसने कहा, अल्बर्ट ने, मैं खुद भी जा रहा था सर। Then we are in agreement, at least Einstein, that for a moment Albert was tempted, he was attracted to tell the man what he thought of him and of his school. Albert को लगा एक बार मुझे ये बताना चाहिए कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ और स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ। But he stopped. Then he stopped himself without another word, holding his head high. He stalked out. Stalked out means he walked out proudly. सीना तान कर चला गया आगे, खुश होकर गया। अल्बर्ट शट द डोर। टीचर ने कहा दरवाजा बंद करके जाना। अल्बर्ट इग्नोर्ड। अल्बर्ट ने उसे इग्नोर कर दिया, कोई रूम को बंद नहीं किया, डोर को बंद नहीं किया, ऐसे ही रह गया क्योंकि ही इज फीलिंग प्राउड, उसे गर्व हो रहा है ना। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। स्कूल से बाहर गया उस स्कूल में जहां पर उसने, मिजरेबल में सो सैड है, 5 years स्पेंड किए थे। विदाउट टर्निंग हिज टू हिज हेड टू गिव इट लास्ट लुक, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू। इन द स्कूल देयर वाज नो वन whom अल्बर्ट आइंस्टीन वांटेड टू थैंक और से गुड बाय। स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन गुड बाय कहना चाहते थे, अलविदा कहना चाहते थे। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली वन पर्सन इन म्यूनिक। इन म्यूनिक ओनली यूरी वॉज वन पर्सन he felt like seeing before he left the town he had come to had almost as much as the school. अकेला यूरी वो इंसान था जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन मिलना चाहते थे जाने से पहले। एल्सा was back in Berlin. एल्सा cousin of Albert Einstein, she was also back in Berlin and he had no other real friends. एल्सा बर्लिन में आ गई थी और उसके अलावा यूरी और एल्सा के अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन के कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी वेरी लेफ्ट। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। एंड डियर स्टूडेंट्स, in this chapter we saw that what kind of dispute was there between Albert Einstein and his SS teacher. His thought towards school, not only towards school but also towards other teachers also. Other teachers of school, especially SS teacher, उनकी बनती नहीं थी। इस कहानी के एंड के बाद हमने देखा अल्बर्ट आइंस्टीन, what kind of future did he have after this? इसके बाद उसका फ्यूचर कितना फेमस हुआ, what did he become in his life, अपनी लाइफ में क्या बना वो। But here Albert Einstein had described the truth of his life. As I told you, he was not interested in the dates of war. वो wars की डेट याद नहीं रखते थे। He wanted to know what was the reason behind that. Why were the wars fought? कि लड़ाई हुई
झगड़े हुए तो क्यों हुए, कौन मरा कौन जीता, इट डज नॉट मैटर, पर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, उस लड़ाई के पीछे रीजन क्या था. ओके स्टूडेंट्स, टुमारो विद नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, थैंक यू.